औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों का जो सेनेट टेस्ट हुआ है उसमें सेलुलर लाइफ, डाइजेशन, सर्कुलेशन और इम्यूनिटी चैप्टर्स इंक्लूड थे। उन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ एमसीक्यूज मेंशन है, हाउ डज HIV infection initially present in the majority of infected individuals? मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स में जब भी HIV एंटर्ड होता है तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? जाहिर बात है तीन स्टेजेस है। एक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है पहले नंबर पे। सो इस वजह से यहाँ पे गिवन ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, इन एसिम्प्टोमेटिक स्टेट टेकिंग स्लो होल्ड ऑफ द बॉडी, क्योंकि HIV का ताल्लुक जो है वो रेट्रोवायरस के साथ है और रेट्रोवायरस में फिर लिंटवायरस के साथ है। और लिंटवायरस में हम ये कहते हैं कि दे रिप्रोड्यूस स्लोली, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का स्लो होता है, साल लगते हैं। सेकेंड नंबर पे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम लाइन फॉर एन अनट्रीटेड HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू डेवलप एड्स? कहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम लाइन्स क्या होगा अनट्रीटेड HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो कि रिप्रोड्यूस स्लोली? किताब में बाकायदा स्टेटमेंट है 8 to 10 ईयर्स जो है वो लगते हैं। सो से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी होगा। थर्ड नंबर से क्यों दिया है, व्हाई आर सर्टेन इन्फेक्टियस एक्सप्लिसिटी क्लासिफाइड एज अपॉर्चुनिस्टिक इनोवेशंस? हम कहते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होती है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का मतलब है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्यों मिलती है डिजीज को अपॉर्चुनिटी? इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, बिकॉज दे टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था इस तरह, इंडिकेट्स में अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज के बारे में पूछा गया था। एमसीक्यूज 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉर्चुनिस्टिक इनोवेशंस ऑफ एड्स? नर्व डैमेज एंड विजन लॉस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 5 पे आते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम हार्ट स्टैंड फॉर? ये मेडिसिन है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 6 पे आते हैं, टू बी क्लासिफाइड इज हार्ट ideally fragments most combines a minimum of how many anti-HIV medications are? 3 or more. Option B is correct. MCQs 8 पे आते हैं, aside from sexual contact in a mother to fetus transmission. 7 पे आते हैं, what common term is sometimes used to refer to the hard daily fragments? इसको cocktails कहा जाता है। MCQs 8 है, aside from sexual contact in mother to fetus transmission, what other biological product is explicitly as a medium for transmission the virus? Blood and blood products के जरिए से। So option B is correct. 9. Proper sterilization methods and disposable needles are explicitly recommended in the prevention of which group of procedures? ऑप्शन बी, एक्यूपंक्चर करना है, टैटूइंग करना है या ईयर पियर्सिंग करनी है, सो इनमें यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10. Which enzyme is directly responsible for preparing the structural components required to construct mature viral cores? Viral protease। 3 एंजाइम वायरस अपने साथ कैरी करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। एमसीक्यू 11 पे आती है, एट विच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल डज द एंजाइम प्रोटीएज प्ले इट्स वाइटल रोल? 6 स्टेजेस आप लोगों ने पढ़े होंगे HIV के लाइफ साइकिल में। पहला स्टेज है बाइंडिंग एंड फ्यूजन, बाइंडिंग एंड फ्यूजन, जिसके जरिए से ये अटैच होता है।
सेकेंड स्टेप होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके जरिए से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप है इंटीग्रेशन, फोर्थ स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फिफ्थ है असेंबली और लास्ट है बर्डिंग एंड मैच्योरेशन। तो यहां पे आपसे पूछा है एट विच स्टेज स्पेसिफिक स्टेज ऑफ एचआईवी लाइफ साइकिल डज द एंजाइम प्रोटीएज प्ले इट्स रोल, प्रोटीएज कौन सी स्टेज पे रोल अदा करेगा? स्टेप 6 में, जिस वक्त बर्डिंग हो रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12. What is the specific biochemical mechanism of action of viral protease? Chopping up long strands of protein into smaller pieces ताकि उसको प्रॉपर assembled किया जाए। So option B is correct. 13. Which enzyme is responsible for facilitating the entry or transport of viral genetic material into the host nucleus? Viral integrase या simple integrase enzymes. Option B is correct. 14. What dual molecular events occur synchronously during viral assembly? Viral assembly में क्या होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी कोटिंग होती है, कोर बनाए जाते हैं, मैट्रिक्स बनाया जाता है, स्पाइक्स बनाए जाते हैं, आरएनए स्ट्रेन्स बनाए जाते हैं, असेंबल्ड किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंथेसिस ऑफ एचआईवी आरएनए एंड प्रोटीन प्रोसेस बाय प्रोटीएज। हता एक चीज याद रखें, अगर इन केस ये ऑप्शन सी मेंशन नहीं है एमसीक्यूज में, देन कौन सा आपके ख्याल में ठीक रहेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन याद रखें, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि बुक के मुताबिक अब सी है, वैसे अगर सी ना हो देन डी इज करेक्ट। 15. What happens immediately after newly matured HIV particles are successfully released from the host cell? C. They are ready to infect another cells and restart replications. 16. What is a notable characteristic regarding the clinical presentation of initial HIV infection in most individuals? Option B. The first symptom will not be apparent for the most people. 17. How does the virus rapidly spread through the human body once inside? Through continuous replications. Option B is correct. 18. Where does the process of reverse transcription take place? Cytoplasm में होता है, so option C is correct. 19. What structure is formed in viral genetic material integrate with the host cell's DNA inside the nucleus? इसको प्रोवायरस कहते हैं, और अगर ये बैक्टीरिया का होता तो हम इसको प्रोफेज भी कहते हैं। 20. Once a person is infected, how can they pass HIV on to other individuals? Body fluids के जरिए से। Option B is correct. 21. What is the precise relationship and sequence of action between helper T cells and killer T cells during an immune response? C. Helper T cell recognize the antigens, activate killer T cells which then destroy the antigens. 22. Which statement best defines the structural composition of human circulatory system? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम है, एक क्लोज और एक ओपन है। 23rd पे आते हैं, इन अ क्लोज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम व्हाट डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द ब्लड मूवमेंट? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। क्लोज है चूंकि ये बाहर नहीं आ सकता, इनसाइड मूव करेगा। 24. व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन? फायदा क्या है? To move material from one organ to another and to the tissue for cellular distributions. Option B. 25th, which of the following is not explicitly listed as a substance transported by the circulatory system?
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसका काम नहीं है, उसके लिए डक्ट होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। 26 बियॉन्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, what homeostatic function does the circulatory system exist with? टेम्परेचर और पीएच को बैलेंस करना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 what is the precise physical shape in general size of the human heart? ऑप्शन बी conical shape in tight and fast होता है। 28 where is the human heart specifically located within the body? thoracic cavity, chest cavity में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 what is the primary function of the tough double membrane is known as pericardium? C. to protect the heart from overextensions. 30 what lies between the slightly separated membranes of the pericardiums? pericardium cavity में lubricating fluids होता है, इसको pericardial fluids कहा जाता है। 31 what dual role does the pericardial fluids play regarding the heart functions? A. lubricate to ease movement and protect from mechanical injury. 32 structurally how many chambers make up the human heart? 4 chambers. Option C is correct. 33 what type of specialized muscle tissue keeps the human heart working untiringly day and night? Cardiac muscles पाए जाते हैं। C is correct. 34 how do the artery compare structurally to the ventricle? Auricles are smaller and thin. 35 what specific anatomical structure separate the left and right atria from each other? Interauricular septum. और अगर दिया होता कि which connect them, तो आंसर क्या होता? Right and left atriums are connected with one another through foramen ovale. Foramen ovale इसको कनेक्ट करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बिफोर बर्थ से, लेकिन बर्थ के बाद फोरामेन ओवेल जो है वो बंद हो जाते हैं। एमसीक्यू आते हैं 36 पे which portion of the heart is formed by the smaller thin walled chamber? Interior portion of the heart. A. किसकी बात कर रहा है? एट्रियम्स की बात कर रहा है। लेकिन अगर इन केस ये चेंबर्स यहां पे मेंशन ना होते, आर्ट्रिया मेंशन ना होता, तो फिर कौन सा रीजन जो है वो थिन होता है? सी द इंफीरियर बेस ऑफ द हार्ट। इंफीरियर बेस ऑफ द हार्ट जो है फिर हमारे पास ये थिन लेयर्स होती है। 37 what structure isolate the largest thick wall lower chambers from one another? Ventricle septum. C. 38 why is tricuspid wall given its specific name? Because it consists of 3 flaps होते हैं। 39 during which specific phase of the cardiac cycle does blood flow passively into all 4 chambers of the heart? First phase diastoles, relaxed mood. C. 40 what is the exact duration of the phase in which both auricles contract together to completely fill the ventricles? 0.1 second टाइम दरकार होता है। 41 what specific physiological event is directly responsible for producing the first heart sound lub? AV wall, atrioventricular wall और dub sound जो है वो semilunar wall की वजह से होता है। 42 at which precise point in the cardiac cycle is the second heart sound dub is produced? In the beginning of diastole due to the closing of a semilunar wall. 43 when the right ventricle contracts to pump the deoxygenated blood to the lungs, which wall is kept closed to prevent backflow? Tricuspid wall close होगा। Option C. 44
Based on the structural composition of antibody molecule, how many total polypeptide chains form a single typical Y-shaped immunoglobulin? 4 polypeptide chains है, 2 जो है वो light है और 2 heavy है. Which region of antibody molecule directly dictates its antigenic specific and contain highly diverse amino acid sequence? Variable regions होता है. एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है. इसमें वेरिएबल रीजन जो होता है यहाँ पे पैराटॉप होता है, एक लाइट और एक हेवी चेन से बनता है, वो रिकॉग्नाइज करेगा. 46. The variable region that form the antigen binding site is composed of approximately how many amino acid? 110 to 130 amino acid से बनता है. 47. The specific mechanism used by an antibody to destroy or eliminate a bound antigen is primarily determined by which of the following? Constant region जो इसको destroy करता है. 48. Which cells are as the actual antibody producing factories? They rapidly secrete immunoglobulin into circulations. देखिए याद रखिए मेमोरी सेल जो होते हैं वो आपके पास 2 किस्म के सेल से बनते हैं. एक किलर टी सेल्स बनाती हैं और एक मेमोरी बी सेल्स बनाती हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो बी सेल्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं मेमोरी बी सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल. जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो ब्लड में भी है और वो लिम्फ में भी है. ये एंटीबॉडी बनाएगी, immunoglobulin बनाएगी. 48. Which cells are the actual antibody producing factory that rapidly secrete immunoglobulin into circulation? That's plasma cell. 49. What structural components chemically link the heavy and light chains together to stabilize the antibody structure? Disulfide bridge के जरिए से अटैच होता है. 50. The variable region of a typical antibody molecule include the terminal ends of which polypeptide chains? Both the heavy chain and the light chains. 51. When antibody freely circulate in the body, docked with pathogens, what are the 2 main outcomes? They neutralize them or mark them for destruction by other immune weapons. Option B. 52. What happens to killer T cells and B cells after they successfully eliminate a pathogen? C. They do not just die off, they leave behind specialized memory cells. 53. When memory B cells encounter a returning pathogens, what do they immediately produce during their explosive immune response? More B cells generate करेगी, clones बनते हैं इनके फिर. 54. What is the specific role assigned to memory killer T cells during a secondary immune response? They produce active killer T cells to quickly eliminate the pathogens. 55. Why is the secondary immune response by memory cells described as a highly effective against a returning pathogen? Because the process of multiplication and action is immediate and explosive. Quick response होता है. 56. If an antibody constant regions are structurally altered, altered means change होना, while leaving its variable region intact, what would be the most direct functional consequences? C. It could still bind the antigens, but its mechanism to destroy antigens would be impaired. If an antibody constant regions were structurally altered, constant regions को change किया जाए, mutation आ जाए, तो constant regions का काम है destruction. अब destruction नहीं होगा, variable region attached रहेगा, recognize हो चुका है, destruction नहीं होगा. 57. Where exactly is the spleen located in the human body? In the upper lift of the abdomen under the ribs. अक्सर बच्चों को जो है ना organs का पता नहीं होता कि
कौन सा ऑर्गन रिफ्ट पे है, राइट पे है, अपेंडिक्स किधर है, पेनक्रियास किधर है, लिवर किधर होता है, ये चीजें ध्यान में याद रखा करें. 58. What is described as the most important and most efficient part of lymphatic system? Spleen. और अगर स्प्लीन ना होता तो फिर आप लिम्फ नोड को लगा सकते हैं, ध्यान में याद रखें. 59. What primary function does the spleen perform regarding red blood cells? It clears one red blood cells. इसको graveyard of the red blood cells भी कहते हैं. 60. Which type of cellular entity in the spleen is specifically highlighted for engulfing and destroying bacteria, dead tissue in foreign matches? Macrophage का काम है. Option C is correct. 61. Why is the study of lymphatic drainage of the various organs clinically vital? It is important in the diagnosis, prognosis and treatment of cancers. 62. What term is used to describe the process where the lymphatic system carries cancerous cells between the various parts of the body? Metastasis कहा जाता है. Option A is correct. Metastasis कहते हैं spreading of cancerous. बस स्प्रेडिंग हो गया, स्प्रेड होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसरस सेल जो है वो स्प्रेड होते हैं. 63. What can happen to intervening lymph nodes if they fail to successfully destroy trapped cancerous cells? Secondary tumors के लिए medium provide करते हैं, तो option C is correct. 64. What is the primary physical symptoms of diseases, infection or problem within the lymphatic system? Swelling in the lymph nodes होगा. Option B is correct. 65. Hodgkin disease is initially characterized by the enlargement of lymph nodes in which area? Neck area. 66. What can be the direct structural consequences of pressure or adjoining organ in nerve ending caused by lymphatic enlargements? Dysfunction of vital organs or paralysis. C. 67. What type of cell is macrophage explicitly categorized? White blood cells. 68. What is the consequences when problem with the lymphatic system impair its overall function? It impairs the body ability to fight infections. Option B. 69. Complete the statement. The intervening lymph nodes can dash the cancer cell. Trap. 70. Which pathogens are explicitly filtered out by the body defense mechanism? Bacteria, virus, fungi. 71. Which artery is the only exception to the rule that arteries carry oxygenated blood? Pulmonary artery. 72. How do arteries handle the strong pushing force generated during ventricular contractions? By being highly elastic to resist and maintain blood flow. और वो भी इसका जो ट्यूनिक का मीडिया वाला लेयर होता है उसकी वजह से होता है. Option B. 73. The outer elastic layer, tunica externa, of the blood vessel is composed of which combination of materials? Areolar tissue or elastic fiber? 74. What specific cell type form the tunica intima? Endothelial cell से बना होता है. 75. What primary tissue constitute the tunica media? Smooth muscle से बना हुआ है. Option B is correct. 76. What functional advantage to the elastic fiber in the tunica externa provide to the artery? They give elasticity. Option C. 77. What is the state of anteroventricular wall while the remaining blood is being squeezed from the arteria interventricles? Remain open. 78. What is directly between the tunica intima and tunica media? Elastin. 79. What structural configuration differentiates smaller arterioles from larger?
Small arteriole consists of only two layers. And second last, what specific effect does the activation of the sympathetic nervous system have on arterioles, and how does it impact systemic blood pressures? Vasoconstriction. C. Or last, which of the following is the thickest wall? Left ventricles.